इस्लामाबाद में ऐवान सदर में तुर्क फौज के कमांडर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब इस वक्त जारी है। Formal proceedings of this special investiture ceremony. Thank you, sir. I now invite Dr. Ikramul Haq for recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل توهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. Honorable President, may I request you to please come on the stage. Ladies and gentlemen, General Umit Dündar, Commander of Turkish Land Forces, Republic of Turkey. He has a distinguished military career. The commander graduated from Turkish Army War College in 1985. Later, he also graduated from United Kingdom Royal Army College in 1991 and Armed Forces College in 1994. General Umit Dündar, during his outstanding military career, served on different staff and command positions, which prominently include Commander of 5th Border Regiment, 1st Mechanized Infantry Brigade, Chief of Construction, Real Estate and NATO Infrastructure Department, Commander of 28th Mechanized Infantry Brigade, Commander of the Multinational Brigade in Afghanistan, Chief of Engineering Department of the General Staff and Commander of Engineering School and Training Center. General Umit Dündar was promoted to the rank of General in 2013 and held the command of 3rd Army for 2 years and later led the command of 1st Army. He was appointed as Commander of the Turkish Land Forces in July 2018 by the President of Republic of Turkey. Ladies and gentlemen, General Umit Dündar is a sincere and close friend of Pakistan. He has played a prominent role in promoting and strengthening defense ties between the armies of both brotherly countries. In recognition of his illustrious services,
the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Umid Dundar, Commander of Turkish Land Forces. Now, I request General Umid Dundar to please come forward and receive the award from the President of the Islamic Republic of Pakistan. Honorable President, Honorable President, may I have your permission to close the formal proceedings of this special investiture ceremony? Thank you very much. Ladies and gentlemen, the proceedings of this special investiture ceremony are now closed. Guests are invited for refreshment. इस्लामाबाद में ऐवान सदर में तुर्क फ़ौज के कमांडर को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री देने की तकरीब जारी थी और उन्हें स्टेज पर बुला के सदर पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज़ मिलिट्री के एजाज़ से नवाजा है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तुर्क फ़ौज के कमांडर को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री देने की तकरीब का आगाज़ सबसे पहले कौमी तराना बजाकर किया गया। उसके बाद तिलावत कुरान पाक से तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ और उसके बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को स्टेज पर मदऊ किया गया और उनकी जानिब से तुर्क फ़ौज के कमांडर को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री दी गया। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने डर्बी में अपनी तैयारियों को फाइनल टच देना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस सेशन में शरीक खिलाड़ियों ने कोचेस की मदद से तकनीकी खामियों पर भी